सी डिस्टर्बेंस आपको बेयर करनी पड़ेगी। एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन समझाऊं तो एक इंडिविजुअल के तौर पे इंडिविजुअल की जो नीड होती है ऑफ मोबिलिटी, ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिस्टर्बेंस आपको बेयर करनी पड़ेगी। outside the city limits, simple example के तौर पे outside the country limits, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन समझाऊं तो रिक्वायरमेंट एक इंडिविजुअल के तौर पे ट्रांसपोर्ट बदलते जाते हैं, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए मोबिलिटीज यूज होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिस्टर्बेंस आपको बेयर करनी पड़ेगी। outside the city limits, aeroplanes या outside the country limits, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन समझाऊं तो रिक्वायरमेंट एक इंडिविजुअल के तौर पे ट्रांसपोर्ट बदलते जाते हैं, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए मोबिलिटीज यूज होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिस्टर्बेंस आपको बेयर करनी पड़ेगी। होता है outside the city limits, aeroplanes या outside the country limits, ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल समझाऊं तो रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल के तौर पे ट्रांसपोर्ट बदलते जाते हैं, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए मोबिलिटीज यूज होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिस्टर्बेंस आपको बेयर करनी पड़ेगी। होता है outside the city limits, aeroplanes या outside the country limits, ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट इंडिविजुअल समझाऊं तो रिक्वायरमेंट ट्रांसपोर्ट बदलते जाते हैं, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए मोबिलिटीज यूज होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिस्टर्बेंस आपको बेयर करनी पड़ेगी। होता है outside the city limits, होता है उसके बीच में शायद वेयर हाउस में गुड्स को स्टोर किया जाता है, तो ये सारे लॉजिस्टिक्स के दायरे में आते हैं। सिमिलरली अगर विद इन द कंट्री भी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा रही है, तो बीच में सप्लाई चेन, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेजेस वगैरह की रिक्वायरमेंट आती है। तो ये सब आता है, तो ये सारे लॉजिस्टिक्स के दायरे में आता है। बहुत ही सिंपल शब्दों में या भाषा में अगर समझाया जाए तो अगर आपको कोई भी एक यूनिट ऑफ गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो विदाउट लॉजिस्टिक्स सिमिलरली अगर किसी इंडिविजुअल को किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो विदाउट ट्रांसपोर्टेशन भाषा में समझाया जाए। तो इस वजह से शायद ये कहना काफी अप्रोप्रिएट होगा कि ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर इंडिया का one of the growth engines है, it's like the backbone of the economy। इंडिया को अगले 3-4 सालों में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हम सपना देख रहे हैं, या अगले 7 सालों में अगर हम इंडिया का साथ 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना देख रहे हैं, पूरा हो सकता है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर का फ्लरिश करना, ग्रो करना क्रिटिकल है और रिक्वायर्ड है फॉर दिस सक्सेस टू हैपन। अब हो सकता है इन्वेस्टमेंट थीसिस की तरफ ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स के थिएटर का, हालांकि जैसे हमने बात की सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स दो सेगमेंट में डिवाइडेड करती है, बट एक्चुअली अगर आप इसका इन्वेस्टेबल यूनिवर्स देखें तो ये काफी डाइवर्सिफाइड थीम है, जिसमें यू हैव की तरफ अराउंड 20 बेसिक इंडस्ट्रीज जो इस थीम का पार्ट है, एंड देयर आर मोर देन 200 listed companies that form a part of the universe for this theme. So you see, ये काफी डाइवर्सिफाइड थीम है
200 कंपनी के साथ ये काफी एक बड़ा यूनिवर्स है जो इस थीम के लिए अवेलेबल है। ना दूसरी जो बहुत ही जरूरी चीज है वो ये है कि यूनिवर्स ये जो कंपनीज और इन्वॉल्व इन दिस थीम या जो बेंचमार्क है निफ्टी ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर का उसका कोरिलेशन विद द ब्रॉडर इंडाइसेस लाइक निफ्टी 50 एंड निफ्टी 500 is very low. When we say that correlation is low, what do we mean? It means that the presence of the company belonging in this theme, companies that are belonging or industries that are belonging in this theme, the presence of that in the broader is very low. Indices like Nifty 50 and Nifty 500 is very small. It means overlap कितना है? It's about 5 to 8% है belonging. इससे क्या फायदा होता है कंपनी इससे ये देखें जहां पे ये हरी लाइन आपको दिख रही होगी, इसने करीब 3% का कैगर बेसिस पे CAGR बेसिस पे आउट परफॉर्मेंस दिया है कंपेयर टू बोथ निफ्टी 50 एंड निफ्टी 500। तो बेसिकली इस इंडेक्स के ये इंडेक्स या ये थीम ब्रॉडर यहाँ पे ये हरी लाइन आपको दिख रही होगी भी क्षमता रखता है और करीब 3% का कैगर बेसिस पे CAGR बेसिस पे आउट परफॉर्मेंस निकले डाइवर्सिफाइड थीम बोथ निफ्टी 50 में काफी सारे सब इंडस्ट्रीज इस थीम का पार्ट है। दूसरा इंडेक्स डाइवर्सिफाइड फंड्स इस थीम कंपनियों का एक्सपोजर काफी हरी लाइन आपको दिख रही होगी है क्षमता रखता है और करीब 3% का कैगर बेसिस पे CAGR बेसिस पे जो परफॉर्मेंस निकले डाइवर्सिफाइड थीम बोथ निफ्टी 50 में काफी सारे सब इंडस्ट्रीज इस थीम का पार्ट है। दूसरा डाइवर्सिफाइड फंड्स इंडिया इसी तरह की कंपनियों का एक्सपोजर काफी हरी लाइन आपको दिख रही होगी क्षमता रखता है और करीब 3% का कैगर बेसिस पे CAGR बेसिस पे जो परफॉर्मेंस निकले डाइवर्सिफाइड बोथ निफ्टी 50 में काफी सारे सब इंडस्ट्रीज इस थीम का पार्ट है। दूसरा डाइवर्सिफाइड फंड्स इसी तरह की कंपनियों का एक्सपोजर काफी हरी लाइन आपको खड़ी होगी क्षमता रखता है और करीब 3% का कैगर बेसिस पे CAGR बेसिस पे जो परफॉर्मेंस निकले डाइवर्सिफाइड बोथ निफ्टी 50 में काफी सारे सब इंडस्ट्रीज इस थीम का पार्ट है। दूसरा डाइवर्सिफाइड फंड्स इसी तरह की कंपनियों का एक्सपोजर
कमाई शुरू होती है तो वो जैसा मैंने आपको कहा कि रोटी और कपड़ा 2000 तक मोरलेस कवर हो जाता है। अगली बार कमाई शुरू आज के समय गाड़ी Saket. Somebody, boss. Yeah, I'm on mute. I'm on mute. So there is an echo because of that. Voice is clear for Bedha. Voice is clear for 1,000 to Bedha. 35,000, right? And within 5,000 US dollars, actually a very small portion of households are going to remain. कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम जो हाउसहोल्ड्स रहेंगे वो 5,000 US डॉलर्स के बैंड के ऊपर चले जाने का प्रोजेक्शन है. एंड
वहां से पोर्शन ऑफ हाउसेस आर गोइंग टू रिमेन 35,000 तक। कहने का मतलब ये है एक्चुअली कि मैक्सिमम जो हाउसहोल्ड्स रहेंगे वो $5,000 के बैंड के ऊपर चले जाने का प्रोजेक्शन है। इसलिए दिखा रहे हैं कि वहां से पोर्शन ऑफ हाउसेस आर गोइंग टू रिमेन तक। कहने का मतलब ये है एक्चुअली कि मैक्सिमम जो हाउसहोल्ड्स रहेंगे हाउसहोल्ड्स आर एक्सपेक्टेड that is expected to buy these, automobiles based on their awareness levels, based on urbanization as a trend setting in, based on higher aspirations in Indians, that is expected to buy these change of trend towards premiumization. मतलब based on their awareness levels, based on urbanization as a trend setting in, based on higher aspirations in Indian nations, that is expected to buy these change of trend towards premiumization. मतलब based on their awareness levels, based on urbanization as a trend setting in, based on higher aspirations in Indian nations, that is expected to buy these change of trend towards premiumization. मतलब based on their awareness levels, based on urbanization as a trend setting in, based on higher aspirations in Indian nations, that is expected to buy these change of trend towards premiumization. मतलब based on their awareness levels, based on urbanization as a trend setting in, based on higher aspirations in Indian nations, that is expected to buy these change of trend हमारे लिए एक बिकॉज जब ये ट्रेंड और ज्यादा एक्सेलरेट होता है ट्रेंड के जो मैन्युफैक्चरर्स कार मैन्युफैक्चरर्स ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एंड वेल प्रॉफिटेबिलिटी भी बेटर तो हमारे लिए एक लेकिन जो इस ये ट्रेंड और ज्यादा टीम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रैशनल या एक ट्रेंड है विच इज आइज टू ईट। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का अडॉप्शन हमारी कंट्री में जरूरी क्यों है? दैट इज बिकॉज गिवन द राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, जिस तरह से फ्यूल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं एंड हमारी कंट्री 80% के रिक्वायरमेंट के लिए इंपोर्ट्स पे निर्भर है, राइट? तो हमारे लिए अगर एक तरफ अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है, इनकम बढ़ता है एंड विच इज लाइकली टू बूस्ट डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल्स, और दूसरी तरफ इफ द फ्यूल प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, सो इसको डिमांड सप्लाई मिसमैच, the demand for raw material is going to be there will be a mismatch, right? So there is definitely a need for alternate fuel given the scheme of things and given the the global macro environment, given the geopolitical environment. Plus जो दूसरा angle है of sustainable energy to reduce emissions, India as a country has also committed to significantly go to zero carbon emissions by 2070 and like various other countries. So all of these things are put together, then EVs is an unavoidable trend, right? Rather, adoption of EVs has to be at a much higher pace. Again, how does it stand to benefit this theme is the question. Now, auto ancillaries is another segment
which is in itself one of the biggest sectors in this subsectors in this space, right? ऑटो एंसिलरीज कंपनीज जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो होती हैं बेसिकली वो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं जो जाके ऑटोमोबाइल्स में फिट होते हैं, व्हीकल्स में फिट होते हैं, राइट? नाउ आइस टू ईवी एज अ ट्रेंड ऑटो एंसिलरी सेगमेंट के लिए भी काफी बेनिफिशियल होने वाली है या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करने वाली है. दैट्स बिकॉज आइस टू ईवी इज going to give a thrust towards लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवी कंपोनेंट्स. तो एक तो हुआ लोकल डिमांड और एक हुआ ग्लोबल डिमांड. तो ये सेगमेंट को ऑटो एंसिलरी कंपनीज को दोनों से इस ट्रेंड की वजह से फायदा होने का अंदेशा है. दूसरा, ऑटो एंसिलरी एज अ सेगमेंट, अगर आप पिछले कुछ सालों का डेटा देखें तो कुछ इंडस्ट्रीज जहाँ पे एक्सपोर्ट के स्टैंड पॉइंट से इंडिया काफी अच्छा कर रही है, उसमें से ऑटो एंसिलरी भी एक इंडस्ट्री है या एक सेक्टर है. वी आर बीइंग आइडेंटिफाइड एज अ एक्सपोर्ट हब because of the high quality of our equipment, because of our manufacturing capability, मतलब efficiency and economics दोनों के standpoint से, right? कि इकोनॉमिक्स इस तरह से कि कॉस्ट एफिशिएंट है, हमारे कंट्री में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेल प्लेस्ड, इकोनॉमिकली अवेलेबल, एंड द क्वालिटी ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस आर आल्सो हाई क्वालिटी. प्लस बेस्ड ऑन द geopolitical scenario and whatever we have seen, there are many companies in the developed world who are looking for alternate trading partners, say outside China, outside Europe, right? That's where India stands to benefit. Plus, ये companies जो auto ancillary space में हैं, अपनी revenue stream को diversify करने, sorry, रेवेन्यू स्ट्रीम को डाइवर्सिफाई करने के लिए प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी कर रही है. प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स इन द ऑटो एंसिलरी स्पेस, ये उसके इर्द गिर्द और कई प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर कर रही है बाय इंपोर्टिंग स्पेशलाइजेशन थ्रू जॉइंट वेंचर्स. मतलब ग्लोबल कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर्स में जाके उनसे सीख कर, उनकी मैकेनाइजेशन सीख कर ये कुछ नए प्रोडक्ट लाइंस भी मैन्युफैक्चर कर रही है, जिससे इनकी एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट लाइन भी डाइवर्सिफाई हो, इनके रेवेन्यू स्ट्रीम भी डाइवर्सिफाइड हो, और दैट विल लीड टू सस्टेन्ड प्रॉफिटेबिलिटी. एंड दिस इज हाउ दिस ऑटो एंसिलरी सेगमेंट इज पोजिशन्ड. अब जो नेक्स्ट सेगमेंट पे अगर हम आए तो वो है एविएशन. अब एविएशन की कहानी इंडिविजुअल के स्टैंड पॉइंट से एक्चुअली ऑटोमोबाइल से कुछ खास डिफरेंट नहीं है. बिल से कुछ खास डिफरेंट नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि as compared to the size of the population that we have, the percentage of population using airline services is actually minuscule, right? Maximum population that we have today in India use trains, right? So आंकड़ों में अगर देखा जाए तो 12%
of Indian population is actually the penetration level is at that. Airports की तरफ देखा जाए तो again number of airports in India has been 2014 में it was 74 as we speak. Right now it's 148 and we expect it to go up to 220 by 2025, right? That is very important. Again, from transportation and logistics standpoint, that the number of airports grow in India. That is because अगर ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को एयरलाइंस यूज करना है और उनके पास अफोर्डेबिलिटी भी आ रही है तो उनको एयरलाइंस यूज करना ही है। और अगर एयरलाइंस यूज करना है तो अगर एयरलाइंस की एयरपोर्ट्स नहीं होंगे अक्रॉस द apart from the bigger cities into smaller cities and also some other locations, तो एयरलाइंस चलेंगी कहाँ एंड दूसरा अगर एयरपोर्ट्स भी आ जाते हैं so there has to be a big enough fleet, right? Number of airlines also have to go up in terms of the total number of airlines flying for people to be using them. So as you understand, ये दोनों चीजें equally important है और इसका thrust will be there for this segment to really grow. जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है लॉजिस्टिक्स। जैसे हमने बात किया कि लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। लॉजिस्टिक्स के अंदर B2B लॉजिस्टिक्स आता है, ग्लोबल ट्रेड आता है और B2C आता है। B2B जहां पे गुड्स का ट्रांसफर होता है, राइट, अधिकतर वहां पे पोर्ट्स, रेल इंफ्रा, सप्लाई चेन वगैरह आ जाते हैं। B2C में ई कॉमर्स आ जाता है और ग्लोबल ट्रेड में ग्लोबल फ्रीट सर्विसेज आती है। सरकार का ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का फोकस इन द लास्ट फ्यू इयर्स हैज बीन देयर टू डेवलप लॉजिस्टिक्स इन इंडिया टू मेक इट more efficient, more economical, and there have been various policies that have been announced towards it. Gati Shakti is one of them. लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भी हाल फिलहाल में अनाउंस हुआ था। और अगर देखा जाए तो इंडिया में एक्चुअली लॉजिस्टिक्स ऑन वेरियस काउंट्स अगर आप दूसरे नेशन से कंपेयर करेंगे तो एक्चुअली काफी इनएफिशिएंट है in terms of size of warehouses available, size of trucks that are running, carrying goods, even the distance that is traveled by the trucks, the speed at which, freight trains run, all of that is quite inefficient as compared to global peers. And hence, there is definitely a very strong case for making logistics more efficient in India. Now, इस पे क्या काम हुआ है और उसने चीजें कैसे चेंज की हैं? हम रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल लेते हैं। सो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर रोल आउट हुआ, राइट? डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बेसिकली एक डेडिकेटेड रेलवे लाइन बनाई गई है फॉर फास्ट ट्रैक ट्रेन्स, टू कैरी goods, and it connects basically Mundra port to Dadri, right? Now ये western dedicated DFC है and it is the most busiest and most frequently used route. Now pre-rollout of DFC, यहाँ जो trains चलते थे, they used to run at a speed of 28 kilometers per hour. Post DFC, the speed has gone up to 75 kilometers per hour, and the time taken to cover this route pre-DFC was 72 hours, right? 3 days. Now that has gone down by 1/3 to 27 hours only. So you see how the efficiency can significantly increase when logistics improve. इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल है पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का। So the southern belt of India is dotted with major and minor ports that we have. Now, if you compare with 20 years back, 2 decades back to now,
not just the number of ports have increased in India, जिससे connectivity has gone up, but the capacity of these ports to handle cargo has also significantly gone up. And how is that happened? It has happened because of higher mechanization, more privatization. Again, JVs जैसे हमने बात की, learning from companies outside India. But it has resulted in significant acceleration in the amount of cargo that is handled at Indian ports. And this is again a clear example of how efficient logistics can improve India's capability and to manufacture more in India, to export more from India. E-commerce की बात की जाए तो in terms of the number of parcels handled, इंडिया में 2021 में 2.7 बिलियन पार्सल्स हैंडल हो रहे थे. ये नंबर एक्चुअली चाइना वहां से 10 साल पहले कर रहा था इन 2010, और 2021 में चाइना 83 बिलियन पार्सल्स हैंडल कर रहा है. यू सी द ह्यूज डिफरेंस दैट इज देयर. तो 10 साल में चाइना ने 40% कैगर ग्रोथ दिखाया. तो अगले 10 साल में अगर हम इंडिया का एस्टिमेट इससे हाफ भी पकड़ते हैं, even then it is through all our imaginations ki how much can India grow on this count. So this is the opportunity that lies ahead. Net to summarize this, basically this is a theme with multiple levels of growth, where we are saying that higher per capita income will boost consumption in the auto sector. Premiumization and regulatory requirement will will lead to more increase in the average selling price of automobiles, means higher profitability. Higher domestic manufacturing and exports would be the cornerstone for auto ancillary industry. Development of ports, DFC, road infrastructure, airline will boost the logistics sector. Now, before I end my presentation, मैं आपको कुछ 2-3 data point दिखाती हूँ which is very relevant to the theme. तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 20 बेसिक इंडस्ट्रीज आर अ पार्ट ऑफ दिस थीम, तो यहाँ पे मैं आपको एक ब्रेकअप दिखा रही हूँ ऑफ द लिस्टेड यूनिवर्स. तो जैसा मैंने आपको बीच में कहा कि ऑटो एंसिलरी इज द मोस्ट बिगेस्ट स्पेस. सो यू सी ऑटो कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स इज द लार्जेस्ट स्पेस. But then there are logistic solution providers, casting and forging companies, tire and rubber products companies, road assets, abrasive and bearing companies, passenger cars and utility vehicles, shipping, tour and travel, and similarly many others, port services, airlines, right? Dealers, CV dealers, auto dealers, etc. So yes, all of this form a part of this theme. Now, this is the breakup of the benchmark of this fund, which is Nifty Transport and Logistics Index. Now, the index may the sector weightage of automobiles is 57%, auto ancillary is 25%, and logistics and others is 18%. And the benchmark is largely a large and mid-cap oriented benchmark. So on this note, let me just pause here, and I'll be happy to take questions now. Thank you, Veda. There are certain questions. I'll share the screen. Okay. So the question is, should I read out the question, or is it visible to everyone? It's visible, but I can read it out. Yeah. So considering the volatility of the market, many fund managers are advising to shift to large cap, balance advantage fund and multi-cap. Why have you launched NFO at this point in time? How much money clients should be investing in this fund? Sure. So, like I started with saying that, this NFO is about a theme which is quite diversified and structural in nature. So, like you rightly mentioned, it is, there is
recommendation of looking at, large cap funds, balanced advantage and multi-cap in the market also. Now, this is also, largely a large and mid-cap oriented portfolio that we'll be looking at when we build it. Secondly, we are positioning investors who are coming in this fund should come with a time horizon of 3 to 5 years. Usually for any theme and any cycle within that theme to play out, it takes a period of at least 3 years to happen, right? And the third point that you've asked, how much money should a client be putting in? Now, in a set of themes that, are expected to do well in the next 3 to 5 years, a client should ideally look at about 20 to 25% of his equity corpus. And the remaining part actually can go into, the diversified funds, which is large cap, balance advantage, multi-cap, or maybe, if you're looking at even mid-cap funds. Okay. The next question is, what should be the sales pitch for this NFO? So, like I was narrating so far, the sales pitch it's a diversified theme. It is underrepresented in the diversified or broader indices and in diversified funds. So the overlap is very small. It's between 5 to 8% ideally. So it's underrepresented, right? It is a structural opportunity. If you look at the performance chart also that I showed you, let me put it up once. Okay, I can't share it right now. If you look at the performance chart as well, and also how this index has performed, and even some of the other funds, which are old, how have they done? You will see that in the last couple of years, this segment, transport and logistics, right, and not auto only, has picked up, and the potential for this theme to, pick up even more over the next decade. Looking at, the thesis that I gave you around demographics, the spending pattern, higher discretionary expenditure, etc., there is a huge case for it. So I think all of this put together, and of course, I told you about ICE to EV as another theme, the prospects in the auto ancillary segment that are there, the focus on the logistics space that is there from, government standpoint. So all of this put together, I think, builds a strong sales pitch for this fund. I think this question you have already answered. The time investor should stay invested in, yes, and what return can be expected. So second part probably you can address. First is you have already explained. So I think what returns he or she can expect standalone is a bit tricky to approach. So let me answer it like this. That as we have seen the overall experience over long term, almost 2 decades, performance that I showed you, the theme has a potential to, beat the broader indices. Nifty 50, Nifty 500, I compared it with, and this theme has delivered 3% outperformance over 18-year period also, so on a year-on-year basis. So it definitely has a potential to outperform the broader indices by, a couple of maybe 1 or 2%, or it has done actually 3% till now. So it could do even better than that. The next is, this category is currently not performing well with existing AMCs like HDFC, ICICI. What different you would do to make this perform well? To an extent you have answered on a broader level. Yeah. You may take this question. So if you look at again the performance, I think the short-term performance has not been that good. And so what happens typically is that though the theme is structural, of course, but in any thematic, part of it is cyclical in nature. And that is why the whole thesis, when we say that one has to give 3 to 5 years for a theme to play out. Now this theme has played out in one cycle that we saw, and now we are positioning this NFO here because after it playing out, it's actually at a beginning of a new cycle. From here,
if one invests, we are positioned at a reasonable time to play out the next cycle, which is expected to happen over the next 3 to 5 years. Hence, it's not about, of course, what different can we do. Every fund's capability in terms of creating a difference is on, an actively managed fund is around what are the stocks that they pick up, what are the sectors in which they allocate as against any other fund. But the main point is that for one investor to sort of play the theme also, you enter or you position yourself in the fund also at an appropriate time so that you are able to play the whole cycle. So that's why we are doing this fund now, and that's how we'll be differently possibly generating experience for our investors. Next is, what will be the risk profile of the NFO? What percentage allocation should be given to this NFO? I think second part you have already answered it, Medha, earlier. First part, if you may cover. The risk profile is, of course, high risk. So it is a high risk fund. One of the advantage of investing or transportation and logistic fund is flexibility and agility. For flexibility is the fund in terms of churning. How flexible is the fund in terms of churning? So in terms of churning, of course, as per the need, as per the reading of the cycle, as per the understanding of the various industries, subsectors, the necessary positions will be taken and modified, right? However, any fund, be it thematic or any fund, some part of the portfolio is built for a longer period of time, and some part of the portfolio is built from the cyclical standpoint to benefit from some visible opportunity that is there. I think that's the approach that this fund is also going to follow. That's all question we had from the advisors. Okay. So thank you so much, Medha, for today's presentation, for explaining it in so simple, so easy language, which was very clear also in terms of understanding. And most of the questions answer you have already explained it while explaining the presentation itself. So it was very easy to understand. Thank you so much. And thank you, partners, for giving your time. Thank you, everyone. Thank you, and please have a nice evening ahead.